Hello to all of you. All of you are doing great. So today we are going to discuss biomolecules, hormones, balance diet, and metabolism in this class right now. So let's start. So we have, as you know, biomolecules, and biomolecules are a range of organic compounds, including carbohydrates, proteins, lipids. So particularly these organic compounds are consist of biomolecules. Are they called biomolecules? Now let us discuss one by one. So we have carbohydrates. These are hydrates of the carbon, as its very name suggests. So they are technically poly hydroxy of aldehyde are ketones. Ketones, right? Aldehyde and ketones are particular class of organic compounds. Okay, poly mean many, so either they are the class of aldehyde or ketones described by their particular functional group in organic chemistry. Okay, that is the technical definition. Now, if we talk about its types, right? So we have mainly three types. One is monosaccharides. So again, its very name suggests mono mean one and saccharides mean, which is Greek word, and that's exactly mean sugar, right? So monosaccharides, it is simple, and it is they are fundamental units of the carbohydrates. Fundamental units of the carbohydrates, right? For example, we have trioses on the basis of number of carbon in the compound. Trioses, tetroses, right? Similarly, we have pentoses, pentamine power, tetramine 4, from Greek language, trimine 3. So this way, it goes up to uh, 6 doses, heptoses, but mainly it is goes up to 6 carbon compounds, as they include 6 carbon atoms. And in this regard, if we take its example, like we have glucose, you know very well, mainly, okay, it can be galactose or it can be fructose. So fructose is the main constituent of honey besides glucose, right? Okay.
और हनी की जो स्वीटनेस है वो ज़्यादातर पेक्टोज की वजह से होते हैं, ये ज़्यादातर मुश्तमिल इसी पे होते हैं. Another kind or type that is oligosaccharides. So here again from Greek language, oligo means few and saccharides mean sugars. So few sugars, and technically we say when you have 2 to 10 monosaccharides, right? And when you combine these, it can be 2, it can be 3, 4, up to 10 monosaccharides compounds, and when you combine them, combination of them via glycosidic, right? Glycosidic bond or linkage, okay? On hydrolysis, ठीक हो गया. जब आप 2 से, ये तो लिमिट है ना टेक्निकली, 2 से 10 तक कोई भी मोनोसैकेराइड्स लेके उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड की वजह से आप कंबाइन करते हो, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस the removal of water molecule. As a result, it gives you oligosaccharides. Okay, so that is the main thing. Okay, now there is another type. Before that, let me take you some example here. So, for example, we have sucrose. Okay, so sucrose, a kind of oligosaccharides, and it is the combination of glucose plus fructose. ठीक हो गया, ये 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है. जब आप, ये भी मोनोसैकेराइड है और ये भी है, जब आप दोनों कंबाइन करते हो, इसके रिजल्ट में क्या हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं. सो इन दिस सेंस सैक्रोज इज व्हाट, दिस इज कॉमन शुगर जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह बनाने के लिए या सब. ठीक हो गया, ये सैक्रोज है. Similarly, we have lactose from milk. So it is the combination of glucose again plus galactose. Spelling में कुछ आगे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी you can understand the situation. So we have another that is maltose, and it is the combination of glucose plus glucose. So these are some of the examples I have given to you. Okay. Now, another type that is polysaccharides. So poly means many, as I told you already. So it can be, the combination of monosaccharides from 9 to 100 units of monosaccharides, and when they combine through again glycosidic linkage, as we talked in the oligosaccharides, with the removal of water molecule or hydrolysis. Now polysaccharides can be, homopolysaccharides, either it can be heteropolysaccharides, right? Homopolysaccharides, it includes starch, as you know, the storage form of plants,
or it can be glycogen, the storage form of animals. It can be cellulose. It can be pectin from protein. Similarly, if we talk about heteropolysaccharides, so it includes hyaluronic acid, okay, it can be कंडोटीन ठीक हो गया तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए now coming to its function how carbohydrates work right how carbohydrate work first of all it is the cheap source of instant energy cheap source of instant energy इसकी एग्जांपल है जब कोई बॉडी डिहाइड्रेट होती है ठीक है तो फिर वो क्या कोई डॉक्टर वगैरह उसको क्या करते हैं वो सक्रोज वगैरह की ड्रिप उसको पास करते हैं तो उसको उसी वक्त एनर्जी मिलती है ठीक है डेक्सट्रोज ड्रिप जिसको हम कहते हैं Similarly, glucose जो है ना it is stored as glycogen as I have told you already that glucose can be stored as glycogen in animal in case of plants we have starch so starch is the storage form of you know plant regarding food जब food की बात आती है and similarly glycogen which is animal storage form regarding food so that is the main concept it also aids in regulation in nerve tissues and energy for brain okay ये तो जो नर्व टिश्यू है उसके रेगुलेशन में भी सपोर्ट करते हैं और ब्रेन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं सिमिलरली व्हेन यू हैव कार्बोहाइड्रेट्स I write shortly that is carbohydrates carbs okay and lipids similarly protein so when you combine them so it produce surface antigen receptor molecules or vitamin antibiotics. It also form structural and protective components of animals particularly. Similarly, carbohydrates are rich in fiber and it works as to prevent constipation. Dextrose ड्रिप की हमने बात की जो बॉडी डिहाइड्रेट होते हैं तो उसको to give them him to give instant energy. So for that cause, to prevent him or her from constipation. It is because of that carbohydrates are rich in fiber. ठीक हो गया ये तो कुछ उसके इसके कुछ फंक्शन थे carbohydrates के now if we talk about its sources so sources can be cereal as you know okay it can be you know fruits particularly dates are the rich sources of carbohydrates
honey. Honey is itself carbohydrates, and it is the mainly the combination of fructose and glucose. और पेट्रोज की वजह से हनी ज़्यादा स्वीट होती है. It can be milk, sugars, sugar beet, potatoes, and sugar cane. So these are the sources of carbohydrates. Sugar cane. All right. Now we are moving towards another important biomolecule, and that is, protein. ठीक हो गया. So protein, technically they are large complex nitrogenous organic compound. They are complex nitrogenous organic compounds composed of one or more long chain of amino acid. ये तो आप जानते हैं. ये तो इसके definition हो गई. So I repeat, a large complex nitrogenous जो नाइट्रोजन पे मुश्तमिल होती है एटम पे, और by nature they are organic compounds हैं, और ये composed होते हैं एक या एक से ज़्यादा long chain of amino acids. So amino acids are the building block of protein. ठीक हो गया. So proteins are essential parts of all living organism. ठीक हो गया. इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है. ठीक है, रिगार्डिंग लाइफ. So comparatively protein provides 4.1 calories of energy per ग्राम. एक ग्राम में तकरीबन 4.1 कैलोरीज ये प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. एक तरफ से कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन यहाँ ये ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं. अब हम आगे जाएंगे लिपिड्स के बारे में. जब हम बात करेंगे तो वहाँ ये सोर्स जो है ना वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटीन. ठीक है. अच्छा, now on the basis of structure, if we classify protein, so we have mainly 4 classes. Okay, it can be primary, it can be secondary, it can be tertiary, it can be quaternary. So that is primary, that is secondary, and that is tertiary, and that is quaternary. ठीक हो गया. ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर की हम बात कर रही हैं. अच्छा, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं. ठीक है, फिर भी कुछ जान लेते हैं. When you go from primary type of protein to quaternary, from here to here, so in this case complexity regarding structure of the protein what increases, that is the concept. ठीक है. इसके दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि प्राइमरी प्रोटीन जो है ना या इसके स्ट्रक्चर, ये मतलब सिंपल है. ठीक हो गया. ये मोर सिंपल हो गया. इस तरह ये मतलब इससे और भी कॉम्प्लेक्स हो गया, और इट इज बिकम मोर complex and comprehensive. So that is the concept regarding the structure of the classes of
protein. Okay. Now, if we talk about the function of protein, so as we have told already a little, but first of all, it builds new tissues, builds new tissues, and tissues are the combination of different cells which function differently. That is tissue. इसी तरह ये रिप्लेसमेंट भी करते हैं जब टिश्यू क्या हो जाए बेकार हो जाए तो ये रिप्लेस भी करते हैं मतलब रिपेयर भी करते हैं दूसरे अल्फाज में ठीक हो गया इट आल्सो regulates activities such as enzyme as we are going to discuss in a while in this class enzyme and hormones हार्मोन्स भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में इसी क्लास में ठीक है एंड सिमिलरली it is also work as protection as antibodies जैसे कि पहले एंटीबॉडीज के सेशन में हमने बात की वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स की एंटीबायोटिक्स एंजाइम्स हार्मोन्स ये बाय नेचर प्रोटीन है ठीक है और हर एक के मुख्तलिफ काम हैं it also responsible for movement as contraction okay contractile protein जिसको हम कहते हैं such as actin and myosin similarly regarding structure of the animals or body parts so creatine is a type of protein and creatine is a type of protein which produces what hair, nails, feathers, horns, beaks of the animals. जो ये चीजें जो है ना ये प्रोटीन से बनी है और ये प्रोटीन कौन सी टाइप की ये क्रिएटिन है ठीक हो गया it also function is the carrier of protein ये carrier of protein के भी क्या है काम करते हैं जैसे कि हमारे ब्लड में क्या है हेमोग्लोबिन जो होते हैं ठीक है ठीक हो गया अच्छा आगे बढ़ते अगर हम सोर्सेज की बात करें प्रोटीन की तो हमारे पास ग्राउंड नट है इससे हम ये हासिल कर सकते हैं बीन्स है लोबिया वगैरह जिसको हम कहते हैं पल्सेस है दालें माले वगैरह और ये ज़्यादातर क्या है ये प्लांट बेस्ड है प्लांट्स बेस्ड ठीक हो गया सिमिलरली वी हैव फिश you can also get protein from fish from egg similarly we have meat milk is also the source of protein and cheese is also the source of protein so they are basically animal based sources हो गई और ये वाले plant based sources हो गया protein okay I hope you are getting the basic idea. I don't see any comment or any relevant or irrelevant question. So you can ask if you find yourself anywhere, find yourself confused anywhere. Okay. Now another type of biomolecule that is lipids. So lipids include fats and oil और ये तो कॉमन चीजें हैं
अब अगर हम इसके अंदर टेक्निकली बात करें, नेचुरली अकरिंग, एक ये क्या है, ये नेचुरली है, नेचुरली अकरिंग एंड अ कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनियस, एक क्या हो गया, हेट्रोजीनियस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जी मैंने शॉर्ट लिख दिया, ऑर्गेनिक ओ सी, कंपाउंड एस, कंपाउंड्स प्लूरल, ठीक हो गया। कंपाउंड्स हैं insoluble in water, H2O is the formula of water। यहाँ पेड़ से और ये अर्ज है, तो ये तो नून बात है कि ये insoluble है वाटर में, पानी में। और ये जब आपके पास क्या हो, बेसिकली जो हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये जब आपके पास ट्राई ग्लाइसराइड्स हो बेसिक फॉर्म, तो ये बने होते हैं ग्लाइसरोल से, ग्लाइसिरोल प्लस अल्कोहल, ठीक है। ये दोनों जब आप कंबाइन करते हो with the removal of water molecule, so you take triglycerides, ठीक हो गया। ग्लाइसरोल जो है ना, ये भी क्या है, सॉरी इट इज नॉट अल्कोहल, लेट मी करेक्ट इट, इट इज व्हाट, इट इज फैटी एसिड, ओके। ये फैटी एसिड हो गया जो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये वाला ग्लाइसरोल हो गया जो एक अल्कोहल है। अल्कोहल जो है ना, ये क्या है, जो OH ग्रुप पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स कैन बी सिंपल, ये सिंपल भी हो सकते हैं, और ये पहले इसकी बात करते हैं। सिंपल लिपिड जो है ना, इट इंक्लूड्स फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। This is one type which includes simple lipids, and this is second type, and that is waxes। So waxes जो है ना, ये क्या है, ester of fatty acid, fatty acid हमने यहाँ बात की, a type of carboxylic acid, okay। So ester of fatty acid with trihydroxy alcohol, ठीक है, जो ग्लाइसरोल बनाते हैं। It is about fats and acid, ठीक हो गया। अब अगर हम वैक्सेस की बात करें थोड़ी सी, तो ये इस तरह फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोहाइड्रोक्सी, यह जो है ना, ये बहुत सिंपल है, लॉजिक है इसमें कि फैटी एसिड्स प्लस ट्राई हाइड्रोक्सी ऑफ अल्कोहल, ठीक है, जो ग्लाइसरोल है, ये इससे बने होते हैं। और ये जो है ना, ये भी फैटी एसिड के साथ जब हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल या कंपाउंड जो कंबाइन होते हैं, तो ये वैक्सेस बनाते हैं, ठीक है, सच एज बी वैक्स, ठीक हो गया। ये इसके एक कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप दैट इज कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स जो है ना, ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, phospholipids, it can be glycolipids, it can be sulfolipids, it can be lipoprotein, and similarly another class that is derived protein lipids. So derived lipids are the combination of simple plus compound lipids, ठीक है। जब आपके पास सिंपल लिपिड्स हो, आप इसको मिलाते हो किस चीज से, कंपाउंड लिपिड्स के साथ,
और क्या करते हो, उसको हाइड्रोलाइज करते हो। ठीक हो गया, मतलब वाटर से वाटर की वजह से रिएक्ट करते हो या रिमूव करते हो, तो as a result you get derived lipids। फंक्शन जो है ना, जिसके पहले बात हो चुकी है, 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स जब ये कंप्लीट क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये तकरीबन 9.3 किलो कैलोरी हीट या एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को, एज कंपेयर टू प्रोटीन विच इज 4.1। या कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के डबल हैं। ठीक है, आप जितने मतलब इसका मतलब क्या होगा इसकी, कि आप कंबाइनली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी खाते हो, लेकिन फिर भी मतलब डबल करते हो, फिर भी उसके जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कम होते हैं। लिपिड्स जो है ना, फूड रिजर्व भी है, एंड इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग हाइबरनेशन प्रोसेस, particularly animal use this process, hibernation process. Lipids, when you combine it with protein, so it forms cell membrane components, जिसको हम lipoprotein भी कहते हैं। ठीक है, so lipoprotein is the combination of lipids and protein which gives cell membrane components. Fats is a type of lipids, and it has the insulating capacity. It deposited in subcutaneous layer to protect organism from severe weather, like polar bears, whales। पोलर बेयर जो है ना पोलर रीजन में रहते हैं, और उसको सर्दी इसलिए नहीं लगती कि उसकी जो बॉडी जो है ना, फैटी बॉडी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, इस वजह से ये इंसुलेटिंग कैपेसिटी पैदा करती है रिगार्डिंग सीवर weather. Similarly, phospholipid is a type of lipids, so it works as absorption and transportation of fatty acids in body. कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये भी लिपिड्स के टाइप है, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन कोलेस्ट्रॉल। ओके, ये क्या है, लिपिड्स है। सिमिलरली लिपिड जो है ना, आल्सो कैरियर ऑफ fat soluble vitamin such as vitamin A, vitamin D, vitamin E in body। ये कैरियर है इन विटामिन के, ए डी ई बॉडी में। अच्छा, स्टेरॉइड जो है ना, बाय नेचर दे आर लिपिड्स, so they have the capacity of antibiotics and antifungal properties। और इसी वजह से जो है ना, शार्क को इन्फेक्शन या कैंसर नहीं लगती, क्योंकि वो उसमें लिपिड ज़्यादा है, स्टेरॉइडल बॉडी है। ठीक हो गया। So now we have enzymes। So they are complex organic compound, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ठीक है, पहले हमने बात की कि प्रोटीन की सेक्शन में कि ये क्या है, ये प्रोटीन ही है बाय नेचर। और पहले जो है ना, इंट्रोडक्शन में हमने बात की कि जो भी बायोमॉलिक्यूल है ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, सो अगेन a complex organic compounds proteinous in nature, enzyme proteinous है, जैसे कि हार्मोन्स है। ठीक है, which alter the rate of already initiated biochemical reaction without being alter itself permanently। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो ये मतलब ऑर्गेनिक, लेट मी राइट इट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया। प्रोटीनियस इन नेचर है, प्रोटीनियस इन
नेचर मतलब प्रोटीन है असल में। और ये जो है ना अल्टर चेंज अल्टर द रेट स्पीड कम करते या ज्यादा करते आप ऑलरेडी initiated biochemical reaction without being alter itself permanently। ठीक हो गया, ये इसके टेक्निकल डिफिनीशन हो गई। अच्छा, example or if you talk about its function or rule, so when you have carbohydrates, when you eat a food and it contains carbohydrates, so when they after that they combine with water in the body, and when you have what saliva amylase enzyme in your body, so it will digest or it will break down those food which contain carbohydrates, gives you energy, particularly plus other components needs your body. Similarly, if we talk about fats or lipids, okay, so largely in intestine, they are broken down by pancreatic, not pancreatic, lipase enzyme. Lipase enzyme in the medium of pancreatic juice या इस क्या है एक और नाम है स्टिप्सिन। स्टिप्सिन एंजाइम भी काम करते हैं इसमें। ठीक है, जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो ये एनर्जी देते हैं बॉडी को। अच्छा, अगर हम प्रोटीन की बात करें, एंजाइम तो खुद भी प्रोटीनियस है इन स्टमक। So mainly proteins are broken down in stomach in the presence of pepsin enzyme, जिसको हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या है, ये पेप्सिन एंजाइम है। ठीक है, ये जब डाइजेस्ट होती है, जो फूड हम खाते हैं, जो क्या किस चीज़ पे मुश्तमिल हो, प्रोटीन पे। ठीक है, तो ये एनर्जी देते हैं बॉडी को और अदर कंपोनेंट्स भी देते हैं। ठीक है, ये तो इसकी फंक्शन हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन in industries, it can be used in food processing like fruit juice formation, starch industries, ripening industries, meat tenderizing, paper industries, biofuel industries, biological detergent, rubber industries, molecular biology, environmental science में भी ये प्रोटीन एज अ कंपोनेंट एंजाइम की बात करें, नॉट प्रोटीन। एंजाइम की बहुत एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, सो अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है क्या कहते हैं इसको, बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट इसलिए है when a diet which includes
right amount of all the nutrients. जब आप ऐसी खुराक या फूड या डाइट खाते हो जिसमें all amount all नहीं बल्कि right amount right amount of all nutrients पर मुश्तमिल होती हो जो क्या करे जो प्रॉपर ग्रोथ और नॉर्मल फंक्शन करे अब द बॉडी, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और ये आते हैं जब आपकी फूड में क्या हो, प्रोटीन हो राइट अमाउंट, ठीक है, जो आपके बॉडी की ज़रूरत होती है। अब ये अलग बात है कि मतलब हर बंदे की पार्टिकुलर्स होती है, कोई मतलब टलर होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई पेट होता है, कोई थिन होता है, ठीक है, वो अलग बात है। किसी को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को विटामिन की ज़्यादा होती है, किसी को मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लेट मी राइट इट कैन बी लिपिड्स भी होती है इसमें, ठीक है, इसमें विटामिन भी होती है, इसमें मिनरल्स भी होती है, ठीक है, इसमें जो है ना मिनरल्स वाटर भी हो सकते हैं, वाटर तो मतलब हाँ बिल्कुल ये भी शामिल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं मेनली। और जब बायोमॉलिक्यूल्स प्लस H2O जब ये राइट अमाउंट में आप इनटेक करते हो, जो आगे जाके प्रॉपर ग्रोथ और नॉर्मल फंक्शन में काम में आए, ठीक है, बॉडी अच्छी तरह वर्क करे, ठीक है, तो इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो इसकी एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आते हैं विटामिन की तरफ, ठीक है। सो वी हैव vitamins. So vitamins, its very name suggests vita, which is vital, and historically it is because of the freshness of amine compounds, ठीक है। So they were called it vitamins, ठीक है, क्योंकि ये उस वक्त साइंटिस्ट कम्युनिटी ने ये कंसिडर किया था क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, वो अमीन है और सारी विटामिन इसी पे मुश्तमिल है, तो ये नाम उसी कंसेप्ट से डेराइव की गई है, ठीक है, जो वाइटल होते हैं लाइफ में, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स पेट सॉल्युबल भी है, ठीक है, जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, और ये पेट नहीं बल्कि वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब आप तो जानते हैं जो वाटर सॉल्युबल है वो क्या है, वो विटामिन सी है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसमें आगे जाके 8 और विटामिन होती है, जैसे कि B1 है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B12 है। इसको हम बायोलॉजिकली और केमिकली थायमीन भी कहते हैं। अब आपने इसको मतलब रट्टा लगाना है, थायमीन, ठीक है।
जैसे भी वो आपने याद करना है, खासकर स्क्रीन टेस्ट में ये लाजमी है। इसको हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। B3 है तो ये इसको हम क्या नाम है, नाइसिन भी कहते हैं। इसको 5 है तो इसको हम पेंटाटोनिक एसिड भी कहते हैं। पेंटाटोनिक एसिड P6, ये तो पैराडाक्सिन है, पैराडॉक्सिन। ये वाला B7, ये तो फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड। और B12 ये क्या है, सियानो कोबालमीन। ठीक है, ये कुछ डायमंड थी जो बी कॉम्प्लेक्स में पाई जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, so we have discussed some topics today's session, and I hope you get the basic idea. For further understanding, you can write the topic in Google search bar, and you will get a lot of material. If you are desirous to know further, ठीक है। अब हर चीज़ की अलग दुनिया होती है, कंप्रिहेंसिव चीज़ें होती है, ठीक है। और आपने कंप्रिहेंसिवली इसको तैयार करना है, ठीक है। So nice of you, and thank you.